क्या हो रहा है? No, 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 wait. वो गायब हो गया। ओह माय गॉड, ये Sheriff? कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, ओह हेल, ये जिंदा कैसे हो गया? इसके चेस्ट में तो हार्ट भी नहीं है। ओह, मुझे तो एक सिंपल एफबीआई एजेंट की स्टोरी लग रही थी, पर यहाँ पर सुपर नेचुरल चीजें चल रही हैं। There's a devil in here. जो स्टोरी में लिखा था वही हो रहा Didn't है। see her. हेलो दोस्तों, मैं हूँ ब्लेजिंग स्कल। मेरे गेमिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अलान वेक पार्ट 2। पार्ट 1 मैंने कल स्ट्रीम किया था और वहाँ पर हमने देखा था कि एक आदमी जिसका नाम नाइटिंगेल है, वो लेक से बाहर निकलता है। वो नहीं जानता कि वो वहाँ कैसे पहुंचा, हम भी नहीं जानते क्योंकि हमें दिखाया नहीं गया था। और वो वहाँ किनारे पर पड़ा हुआ था और उठकर वो जब जाने लगता है हेल्प की मदद की तलाश में, तो उसे आगे कुछ लोग दिखते हैं लाइट्स लिए हुए। तो उसे लगता है कि वो उसका हेल्प करेंगे, पर वो उसे मार देते हैं। और वीडियो को देखकर हमें पता चलता है कि वो कल्ट ऑफ ट्री था और उन्होंने उसे मारकर उसका दिल निकाल कर बाहर रख दिया था। किसी तरह का रिचुअल कर रहे थे वो लोग। और उसके बाद हमें दिखाई देता है कि सागा एंडरसन जो एफबीआई एजेंट है वहाँ पर एंट्री लेती है। अब वो पता लगाएगी कि ये कल्ट कौन है, किलर कौन है और विक्टिम असल में था कौन और उसका बैक स्टोरी क्या है, वो वहाँ कैसे पहुँचा। तो उस एजेंट के साथ, सागा एंडरसन के साथ हम भी एजेंट बन गए यहाँ पर, क्योंकि हम ही तो कंट्रोल कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, कंटिन्यू करती हूँ। Body is positioned on the table. Ritualistic. You unlocked your first key image. You can place it on caseboard inside the mind place. तो हम माइंड प्लेस में चलते हैं। ये रहा फोटो। Another body turns up just as we arrive in town. Coincidence? कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। Objectives are available at the caseboard in your goals. कंट्रोल करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारा गोल जो हमें करना है, इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन। तो हमारा गोल है कि इन्वेस्टिगेट द क्राइम सीन। एस्केप मारेंगे तो हम बाहर निकल जाएंगे। मैं यहाँ पर दोनों यूज़ कर रही हूँ, अपना कीबोर्ड और अपना कंट्रोलर दोनों, जिससे मुझे जम जाए। चलो F क्लिक करते हैं। Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. मैंने ये सब कर लिया था कल, इसने सेव नहीं किया और The मुझे फिर killer से left the heart right next to the body. करने के लिए कह रहा है। Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. इन लोगों ने उसे पहले बांधा, फिर उसका चेस्ट काट के दिल निकाल लिया बाहर। अब इनको हमें लगाना है। ये सारी कड़ियाँ हैं जो पिछले मर्डर से हमें जोड़ती हैं। Heart removed from chest. Strapped by the wrists. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. तो हमारा गोल है लर्न मोर अबाउट द विक्टिम, लर्न मोर अबाउट द किलर। ओके, चलिए शुरू करते हैं। Who is our victim? Who killed him? Need to find more clues.
ये डिप्टी थ्रॉन्टन हमें बताएंगे। Any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about 13 years ago. Now, I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. यप, Oh, and चलो sisters. आपसे भी पूछते कि आप भी जानते हो विक्टिम कौन है। So you knew our victim. Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Nightingale went missing 13 years ago. 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. यहाँ पर देखते हैं क्या है। ये ट्राइपॉड। Someone left in a hurry. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. ये फोटोज लाएंगे आएंगे हम यहाँ पर। Robert Nightingale, ex-FBI, came to Brightfalls 13 years ago. ये अभी ओपन नहीं हुआ है, बाद में होगा। बाहर निकलते। Was he killed here or brought here after? For display. आप लोग और कुछ बताना चाहोगे? आप नहीं बताओगे, ठीक है, कोई बात नहीं। हम लोग ओह, ये भी देखना। Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers? ये फुटप्रिंट्स दिख रहे हैं ना, I think इससे that's पता everything. चलता है। For now, at least. Mm-hmm. Anything clicking yet? Not sure. Need to think about it. अब हमें माइंड प्लेस में जाना पड़ेगा क्योंकि हमें सोचना है। लेट्स गो। किलर्स। Footprints indicating multiple killers. Quite the party. बहुत सारे लोग थे वहाँ पर जिन्होंने मर्डर किया। They planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Why here? Why now? सोचने वाली बात है कि 13 साल से वो इंसान मिसिंग था Profiling. और उसका Get मर्डर into the अभी हुआ है subject's 13 head. साल बाद। See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. अब जा Piece it together. अब हम जाएंगे प्रोफाइलिंग करने। चलो देखते हैं। Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Like the switch, it goes click. Lights are off. But somebody's home.
Somebody's home. This wasn't some random act of violence. नाइटिंगल This was a और ritual, अलान वेक की a स्टोरी nightingale है. component. अलान वेक फर्स्ट They में didn't see him as a person, मैंने खेला नहीं तो मुझे पता more नहीं like है, a container for पर मुझे something. पहले खेल लेना चाहिए था अलान वेक, उसके बाद इसे खेलना चाहिए था, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि अलान वेक 1 में हुआ क्या था. लेट्स गो. प्रोफाइलिंग हो गई है. क्या यहाँ पर कुछ और है करने के लिए? लेक से तो वो आया था, वो तो हमें भी पता है. कुछ नया बताओ. चेक द लेक शोर. अब हमारा नेक्स्ट गोल है लेक शोर चेक करना. उसके लिए हमको The जाना lake is पड़ेगा. connected to Nightingale somehow. चलो देखते हैं हम Hey, वहाँ see, पर कुछ क्लू Let's मिल take a जाए. look down by the lake. Lead the way. Sounds good. This way, right? Right. Well, okay. Well, I'll just wait here. हाँ, वेट करना, कहीं और मत चले जाना. मैं This सोची one of your hunches, Anderson? Did something happen at the lake? I think Nightingale came up from that direction. From the lake. Probably looking for shelter. Safety. They were waiting for him. When you're ready, I'd love to hear what you put together so far. Sure. It's not that complicated. Nightingale was out in the woods alone at night, possibly nude. The killers knew he was here, ambushed him, dragged him to the campgrounds, strapped him to the table, cut his heart out. But then they were interrupted by those witnesses, the Bookers. The job is unfinished. That seems pretty complicated to me. What was this guy doing skinny dipping at this time of year? Haven't figured that part out yet. Lots सही of बात है. questions. स्किनी Lots of बिना answers कपड़ों के for वो us to क्या कर find. रहा था? I didn't know Lake में. trees got that big. Oh my god, Gives me it's the really creeps. big. You need बहुत to get out ज़्यादा more. बड़ा है वो. It is kind of creepy, though. बहुत ही ज़्यादा creepy. ओह, यहाँ पर कुछ है. Tracks. Barefoot. Nightingales? They come out from under the boulder. It makes no sense. There's a piece of paper on the ground. देखे तो ये क्या है? A page full of text on one side. Not a printout. Written with a typewriter. Old school. Lines scratched out and edits added with a pen. Like a manuscript. Page of a story. Killer left a message. It's for us. The text is about us. About us? The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale. And then there was the page they found. The first step down into terrifying depths. Reading Reading the words. words. These words felt like a message. Felt like a message. Someone knew they were here. Someone playing a game. ये with them. राइटर है अलान वेक, और An अलान वेक invitation. के द्वारा ये लिखा could they हुआ not है accept? मैन्युस्क्रिप्ट. Even if they knew it would end up hurting them. इट्स लाइक कि इसकी स्टोरी चल रही है, उसने जो लिखा है. Someone's been watching us. Playing a sick game with us. You were right. This is right up my alley. Nightingale came this way. Either he dropped this page, or the killers left it for us. चलो अब चलते हैं माइंड प्लेस में और देखते हैं कि हमें I को should profile कहाँ. Nightingale about this page. प्रोफाइलिंग में जाके ये पेज लगाना है. We found a Ah. page in the woods. A story about these events. What is Nightingale's role in this? I carry his words close to my chest now. Inside, the awful truth. You must dig it out. Something was put inside him. In his chest.
I must find out what. रियली? वाह। चलो, ये तो हमने मतलब अभी सागा एंडरसन ने पढ़ा है तो इसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। डबल डबल क्यों पढ़ना है? तो हो गया अपना गोल। क्या है? फिगर आउट व्हाट हैपेंड टू। यहाँ पर कुछ है क्या लगाने के लिए? ओके, ये नाइटिंगेल का फुटप्रिंट और ये है ट्रेल हैज गॉन कोल्ड। यहीं पे लगेगा ना? हाँ। I think he came from the lake. But his tracks make no sense. Found all I can here. Time to properly examine the body. See what I can find inside. इस, इसमें क्या लिखा हुआ है? Reading the words, these words felt like a message, someone playing a game with them. Okay. Casey, I think something's been put inside Nightingale's body. Let's tell the deputies to get the body to the town morgue. Okay. Whoever wrote that page made sure it read like a story. Like a scene from a thriller. I hate all of it. The text said we'd find more. I believe it. But what's the purpose? They're twisting events to create their own narrative to do what? Entertain some fantasy? Projecting their desires? Yes. Are we characters or the audience? Witnesses to their design? All the above? It's all about control. Deciding what happens to who. Don't let it drag you in. Too late. I'm already hooked. I need the next chapter. तो यहाँ पर मैप में हम देख सकते हैं कि बहुत सारी जगह हैं और इन जगहों में मैं जाकर देखना चाहती हूँ कि हमें क्या क्या मिलता है। Did you know this entire area is inside a भाई कितने caldera? बातें करोगे? बस करो। This whole कुछ एक्शन भी mountain कर used to लो। be an active volcano. Imagine बहुत the बातें force it करते took हैं ये to लोग। carve this crater out of the earth. Calderas are pretty rare, so be sure to take it in. So, essentially, we're standing in the gaping maw of hell. You got it. I used to love geology when I was in school. I helped Logan build a great baking soda volcano for her science fair. Cheating on a science fair? That's almost a crime, Anderson. I'm not gonna say no to quality time with a volcano. I mean, my daughter. ये मेरे लिए रुका हुआ है, ये बगैर मेरे जाएगा नहीं। बातें हो गई तो मैं कुछ देख लूँ। I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Oh, really nice. So nice. Oh, ये है witch's hut. The witch's hut. Here lived the witch of Cauldron Lake. Beware, her spirit may still haunt this place. यहाँ पर उस विच की आत्मा हो सकती है। Beware, सावधान रहो। अभी सावधान रहना है। ये रहा उसका हट, उसकी झोपड़ी। हम देखते हैं यहाँ पर क्या है। सारे विचेस के पास ये चीज़ होती है, ये कॉमन है। ये है बकरे की मुंडी, स्कल हेड का, और इसमें वो पता नहीं क्या बनाती होगी, पर इस पे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि ब्लड है। अब मैंने सोचा एक पल को ये उसका झाड़ू है, पर वो झाड़ू नहीं है। अरे दो स्कल क्यों है यहाँ पे? ओके, और ये एक हिरन का मुंडी है, स्कल आई मीन। और यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो बाहर चलते हैं हम लोग और यहाँ पर देखते कुछ मिलेगा तो। क्या है? हमारे काम की चीज़ नहीं है यार। क्या मस्त जंगल है, ऐसी जगह मुझे रहना पड़े तो कितना अच्छा रहे। हर चीज़ के अपने फायदे नुकसान हैं, तो नहीं रहना। Friday, Midge told me today that her family is moving away. This sucks.
I haven't even told her that I like her yet. What's the point anymore? She said her parents want to get better jobs and get her to a better school in a big city. I guess that's fair. Who wants to stay in bright fucking falls? Sunday, so I told her. She said thanks. Fucking kill me. Monday, I snuck out last night again, went to the big house by the lake. Instead, instead of just watching it from here like I always do, instead of just sitting around like I always do, screw that. Anyway, something weird is going on down there. I'm going to find out what. Going to go back there tomorrow with better gear. I bet I can find a way inside the building, take some photos. It's gonna be epic. तो पहले ये यहाँ पर मिच की बात कर रहा है जो सिटी में रहने जाने वाली है और वहाँ पर स्कूल में जाएगी, पर इससे पहले कि ये कुछ कहता, कहीं लव वव का तो चक्कर नहीं है बाबू भैया। यहाँ पर कुछ बैटरीज रखी है, हम ले लेंगे। हमारे पास एक पिस्टल है और ये है खास चीज़। इसे हम नाइटमेयर नाइटमेयर का कुछ तो कहते हैं। इसे लगाते तो नाइटमेयर्स नहीं आते हैं। Is that a kid's lunchbox? कहाँ कहाँ कहाँ, मुझे भी देखने दो। कहाँ है किड्स लंच बॉक्स? मुझे तो नहीं दिखा। वो यहीं कहीं पर आसपास होना चाहिए क्योंकि ये इंडिकेशन है कि लंच बॉक्स है आसपास में, पर मुझे नज़र नहीं आ रहा। ओ, ये रहा लंच बॉक्स। ओ, ये नहीं है। मुझे थोड़ा ठीक से देखना पड़ेगा। ओ, ये रहा। थोड़ा सा ट्रिकी An बनाया है लोगों Alex ने। Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. तो केसी के नाम से मूवीज बनी है, मतलब मूवी में एजेंट केसी है, तो ये वाला केसी जो सागा के साथ है वो हिट करता है मूवीज, और कोइंसिडेंस है। चलो देखते हैं जो भी है। I know things can get a little crazy around here, but if you are ever feeling scared, just remember that Alan is watching over us. और ये हम उठा लेते हैं मैन्युस्क्रिप्ट फ्रैगमेंट्स। तो ये जो पत्थर है और वो जो नाइटमेयर से बचाने वाला वो जो लटका हुआ था डेकोरेशन वाला चीज़, वो इंडिकेशन है कि आसपास लंच बॉक्स है। तो अगर आपको अपने वेपन्स को अपग्रेड करना है तो लंच बॉक्स को ढूंढना ज़रूरी है, इससे ही वेपन अपने अपग्रेड होंगे। तो ये रहा अपना अपग्रेड करने वाला सेक्शन। देखो यहाँ पर 18 मतलब पीसेस चाहिए मैन्युस्क्रिप्ट के। हमें सिर्फ एक ही मिला है और हम उसके बाद अपने वेपन को अपग्रेड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर है मोर ब्लेड्स अगेन एंड अगेन, अनदर हेड शॉट, होल्ड द फायर बटन टू एक्टिवेट ऑटो फायर मोड, दिस सिग्निफिकेंटली इंक्रीजेस द रेट ऑफ फायर, मोर बुलेट्स। तो सबसे पहले मैं इसे ही करूँगी, मुझे मेरे मैगजीन में और बुलेट्स चाहिए। मैं बार बार रिलोड नहीं करना चाहती किसी को मारते वक्त। लैंड टू हेडशॉट इन क्विक सक्सेशन। उसके बाद इसको करूँगी और लास्ट में इसको करूँगी। लेट्स सी। अरे हाँ, हमको जो है इनको कहीं पर लगाना होगा। तो केसेस में देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास दूसरी फाइल आ गई है जिसमें लिखा है एलेक्स केसीज लंच बॉक्स। Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message? लंच बॉक्सेस रख के ये हमें कोई मैसेज देना चाहता है। तो हम हैं क्लाउडर लेक में, यहाँ पर लगाएंगे इसको।
तो इसके हिसाब से हमें 8 लंच बॉक्सेस की फ़ोटोज़ चाहिए, हमें एक ही मिला है, 7 और ढूंढने हैं। तो चलो ढूंढते हैं। थोड़ा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ये बहुत स्लो है और ये जगह डरावनी है। तो एक रास्ता जाता है ऊपर, एक जाता है नीचे। चलो नीचे ही चल लेते हैं पहले और देखते हैं यहाँ पर हमें कुछ मिलता है या नहीं। ओके, यहाँ पर हमें कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि Can't go यहाँ any पर further. Water's पानी too भरा deep. हुआ है। पानी जब उतर जाएगा तभी हम यहाँ पर आ सकते हैं। मैं भागे जा रही हूँ, दौड़े जा रही हूँ। Seems like a nice town so far. Murders aside. Pretty woods. Cute lodge we got set up in. We should go for a hike if we get a chance. Now you're just being mean, Anderson. Deputies aren't exactly up to the task, but hopefully the sheriff will be more helpful. Not a surprise about the deputies. Doubt they see much stuff this gruesome. ये है मोटर फॉल्स। This powerful feat of nature will receive the spirit as it does the surrounding nature. The churning, grinding waters at the bottom of the falls resemble a mortal and pestle, quite like the one the witch of Cloudon Lake is fabled to have used to travel through the night sky. जैसे हम लोग किसी जगह पे घूमने जाते हैं तो वहाँ पर नोटिस बोर्ड लगे होते हैं और उस जगह की खासियत के बारे में लिखा होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फॉल्स के बारे में और हम देखते ओके ओके हमें मिल गया एक रंगीन पत्थर जिससे जो इंडिकेशन है कि यहाँ पर आसपास है लंच बॉक्स। तो हम देखते हैं कि लंच बॉक्स कहाँ पर है। ये A रहा lunchbox again. Who's leaving these out here? दूसरा लंच बॉक्स मिला है जिसमें से 2 फ्रेगमेंट्स मिले हैं मैनस्क्रिप्ट के। हम पढ़ते हैं यहाँ पर मैसेज क्या लिखा हुआ है। My dad used to say when the going gets tough, the toughs get going. अच्छा मैसेज है। Not sure where the tough get going to, but maybe you will find it inspiring. तो और मैसेजेस जब हमें मिल जाएंगे तो एक साथ सबको लगाएंगे। अभी इसको छोड़ देते हैं। हर एक चीज़ के लिए माइंड प्लेस में जाना इट्स मैं देखूंगी कि मैप में हम कहाँ हैं। ओके ओके, अब हम यहाँ से आगे जा सकते हैं। खैर अगर मैं यहाँ से आगे गई तो मुझे काफ़ी घूम फिर के आना पड़ेगा, फिर भी हम जाएंगे और देखेंगे। बहुत बड़ी जगह है ये हाइक के लिए, सच में बहुत ही अच्छी। ओके, इससे आगे नहीं जा सकते हम। I'm not done here yet. आई गेस यहाँ पर पेड़ गिरा है तो यहाँ पे भी नहीं जा सकते, तो कि यहाँ से नीचे चले जाते हैं। ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास वापस पीछे जाने के अलावा। क्या मैं यहाँ पर आई थी? यहाँ पर एक फ़ोन बूथ है जो कि बहुत ही पुराना है, इस पे झाड़ियाँ उगाई हैं। ओके, ये रहा जनरल स्टोर। मुझे जाना चाहिए, हमें बॉडी को मॉर्न भेजना है।
नो आई एम नॉट. कैसे बात कर रहे हो, कैसी? Hey, you made it back. Good. I hope you didn't get stuck in any of those big puddles. Crazy flooding down there, huh? Just like I said. Deputy, I want the body taken back to town for a proper examination ASAP. Well, sure. But the coroner won't be back जितने in town जल्दी for हो another सके. week after Deerfest. Not a problem. ऑटोप्सी I'll do it करानी है myself. उसकी. Oh, and Sheriff Breaker called to say he's got the bookers सागा at the जानना Odear चाहती कि उसके Diner in चेस्ट town. में कुछ भरा गया है Oh, क्या. and I've got a key to the gate. It's a shortcut back to the parking lot just up the hill. चलो ले लेते हैं ये की. Thanks. Let's get the car, drive to Bright Falls, and talk to these witnesses, the Bookers. At the diner, right? I could use a cup of coffee. Let's try that shortcut the deputy mentioned. Sounds good. तो हमें शॉर्टकट जाने की चाबी मिल गई है. इंटर मारते हैं. अब यहाँ पर फिर बातें होने वाली है. आई नो. नहीं हो रही है, नहीं हो रही, फिर दौड़ो. क्या यहाँ पर कुछ है मेरे काम का? ओके नहीं है. ओके यहाँ पर जाना है ना. ये क्या है? यहाँ से जनरेटर शुरू होता है, लाइट वगैरह कुछ. लेट मी सी. खुलता नहीं. क्या यहाँ पर कुछ है? ओके हम यहाँ पर देख रहे हैं एक और लंच There's another बॉक्स. lunchbox. यहाँ से हमें 2 फ्रेगनेंट्स मिले मैन्युस्क्रिप्ट के. वी आर ऑल इन दिस टुगेदर हीरो. हैव अ हेरोइक डे. चलो नीचे कूदे. Can't fit the clues all together yet. Heart removed, tripod, tracks leading to a dead end. A tripod for a camera? To record a snuff film? Maybe. And why take out his heart just to throw it away? To stuff in something for us to find. मुझे भी यही लगता है. पर वो रिचुअल भी तो हो सकता है. तो यहाँ पे भी की इस्तेमाल करनी है मुझे. ये तो वही जगह है जहाँ से मैं आई थी. नहीं ये अलग जगह है. आई वुड लाइक टू गो देयर. मैं देखना चाहती हूँ यहाँ पर अगर मुझे कुछ मिले. I think I saw something. It'll only take a minute. I'll wait here. The rarest wildlife in Pacific Northwest. अच्छा यहाँ पर कुछ लोग थे जो बर्ड के बारे में ढूंढना चाहते थे. अक्सर ऑफ कोर्स कैसी बात कर रही हूँ मैं. जंगल होगा, हाई प्लेस होगा, पहाड़ होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पर बर्ड के फैंस आएंगे, दीवाने जो. I have finally made my way to Cauldron Lake. The fence was easy to climb over with the proper gear and skills which I thankfully possesses.
Next goal is spotting the rare and elusive orange-crowned warbler. A little late in the season, but hopefully I can catch it before it begins its journey south. I have noticed intriguing behavior in the surrounding common birdlife. They seem to be alarmed and swarm around the lake. No birds of prey nearby. There are some strange sound carried on the wind. However, nothing I can recognize or explain. Getting a little concerned, I might have to find another spot somewhere, somewhere safer. The sounds are getting closer. भाई इतना क्यों लिखा हमारे जैसे आलसी लोग नहीं है भाई moved inland fully stunning must come back in fall had to stop and sketches this gorgeous fine maple just at the way the Methuselah beard hangs off it. This is why trees are better than people. Speaking of people, saw some drunk guy staggering around the forest earlier. Acting weird, maybe drugs. Kept my distance. Should properly find another spot. So annoying. After I saw that weirdo guy, I decided to change spots again. Moved up the mountain a bit, found a fantastic overlook to camp at, but I am more interested in this Alaska onion grass. Invasive but edible and surprisingly tasty. Started hearing wolves or wild dogs or something like 10 minutes ago, but they sound wrong. Rabies want to leave, but the sun is going down, and my stupid phone is dead. Gonna hide in the tent and hope they go away. Something is really not right about this place. ऐसी मतलब कुछ अजीब चीज़ें हो रही है तो थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा आई गेस यहाँ पर रास्ता ख़त्म होता है तो हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा Hey, Casey. What's What's the the forest's first favorite shape? Please, Anderson, just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. It was a joke भाई यहाँ पर कुछ नहीं था What the hell यहाँ पर कुछ भी नहीं था ये बस ऐसे ही जगह है ऐसा कैसे हो सकता है कुछ तो होगा वहाँ पर Here we are. Let's drive back to town and meet the मुझे sheriff at एक the बार diner. और जाना I'll है look वहाँ around. पर See you in a bit. Take your time. सच में यहाँ पर कुछ भी नहीं है What the hell मुझे लगा कुछ तो होगा पर कुछ नहीं है Okay, let's get out of here. हम पार्किंग तक पहुंच गए हैं शायद Good to see you still in one piece, Anderson. I can't get that manuscript page out of my head. I've never seen killers reach out so directly before. Damn impressive work so far. With your technique, these hunches were moving fast. I wasn't sure about taking a case so far from home, but I'm thrilled to be here for this mystery. Need to swing by the lodge to get anything from the field office? No, I'm all set. I'll park there anyway. I want to walk to the diner, get a feel for the town. The diner's just up the waterfront. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. You smell coffee? आपको कॉफ़ी पीनी है तो जाओ पियो मेरा गोल क्या है भाई Interview the witness at the diner
डाइनर के पास जाना है हमें. कहाँ पे? You said hi. Talk to me then. You're not talking. What the hell? डाइनर किधर है भाई डाइनर? Just how much coffee have you had today, Charlie? ये लोग कॉफी बेच रहे, कॉफी का कपड़ा पहन के. Don't care. वाओ, How much did you have? Not enough. That's all ये right. कितना सुंदर है. Not to toot my own horn, but I am pretty darn sure my, I mean our float will be the belle of the ball at this year's Deer Fest. Just a few more days. It's a nice looking float for sure. This is my first Deer Fest, so I don't know what to expect, really. It is the finest entertainment a town like ours has to offer. The happiest day of the year. Like Christmas, but better. Well, I certainly hope so. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. मैं बस थोड़ा ऐसे ही घूम रही हूँ और देख रही हूँ ये जगह. ये ब्राइट फॉल्स स्ट्रीट. The Founders Park was relocated here as our small town keeps growing. We are sure you will find this placement for the park every bit as wonderful and relaxing as the previous one. Welcome to the new and improved Founders Park. लोग बैठे हुए हैं पार्क में. ये पार्क काफी सुंदर है. My sweets. ओह, मैंने उड़ा दिया. I'm sorry. तुमने मुझे कुछ कहा? Birds, I might just go a little nuts. मैंने नहीं उड़ाया. Cuckoo, if you will. ओके, Another one of those lunch boxes. मिल गया. यहाँ पर 5 fragments मिले. You wouldn't believe how hard it was to track down these lunch boxes. That goodness for the internet. We're doing something. I know. ओके, यहाँ पर और कुछ खास The नहीं. passage of time is deceiving. The days of our lives. मुझे ऐसे ही बाहर नहीं घूमना चाहिए. And in the end, भाई साहब, ये तो डरा रही है इस तरह का के. Who else to keep this city clean if not? ये सब कुछ ना कुछ बोल क्यों रहे हैं? Who else to protect its citizens? This is strange. Hi there! वो हाय के बात और कुछ बोलते नहीं है. भाई मुझे कहाँ जाना है? मुझे अभी तक मैप नहीं मिला है. हाय, मुझे मैप कहाँ से मिलेगा? ये मेरी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है. ये क्या लिखा हुआ है? This historic Elderwood Palace Lodge of Brightfalls. This building was constructed as a part of one of the early settlements in the greater Bright Falls area. Built in 1898, building has been both in private and public use through the years and has bravely stood the test of time. In 2015, it was carefully taken apart and relocated here
in downtown Brightfalls, where it was rebuilt into its original glory. Log by log, the Elderwood Palace Lodge reopened in Brightfalls in 2016 and has served its customer faithfully ever since. अंदर चलते, मैं यहाँ पर इस होप में अंदर जा रही हूँ कि मुझे मैप मिल जाए. ओके, हमें मैप मिल गया जहाँ पर हम देखेंगे कि डाइनर्स कहाँ है. डाइनर्स, ओके, डाइनर यहाँ पर है. तो मैं गलत जगह खड़ी हूँ. मेनू स्क्रिप्ट पेजेस. The victim was one of their own. FBI Special Agent Robert Nightingale, gone missing here 13 years ago. Now he had suddenly turned up, only to be murdered in a brutal ritual on the very day of their arrival. And then there was the page. This page, the first page that they had found, not the last. The first step down into terrifying depths. Secret truths trembling beyond the threshold. Reading the words, these words, felt like a message. Was a message. Someone knew they were here. What they were doing. Someone playing a game with them. Leading them on. An invitation. How could they not accept? The sheer audacity of this impossible mystery presented to them. Even if they knew it would end up hurting them. बताओ अलान वेक यहाँ पर स्टोरी लिख रहा है और उस स्टोरी में उसने जो लिखा है एग्जैक्टली वही चीज़ें हो रही है. दैट्स काइंड ऑफ स्ट्रेंज. हमें कुछ लगाना है यहाँ पर. ओके, हम ये लगा सकते हैं यहाँ पर. और ये आई गेस ये ब्राइट फॉल्स का है. इसका भी हमें कितना चाहिए, 7 चाहिए. एक मिल गया है तो. और केस बोर्ड पे हमें कुछ लगाना है क्या? नहीं, कुछ नहीं. तो हम वापस चलते. बाय बाय. देखो मैं सही जा रही हूँ या नहीं. हमें डाइनर्स पर जाना है. आई गेस डाइनर्स ये रहा. मैं स्पेस दबाती हूँ ये सोच के कि वो जंप करेगी, पर वो कुछ और कर रही है. लेट मी सी वंस अगेन. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's thank Washington's you. finest. Nice to meet you, Sheriff. Nice to I'm meet set you. for coffee. You know, I wouldn't नहीं say no चाहिए to यार, another. मुझे तो चाहिए था. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Take your time. We've looked through the case files you sent over, Sheriff. Have you had many people besides the known victims go missing? Sure. But it's slowed down ever since Cauldron Lake. Excuse me. I'm Agent Saga Anderson. ये Are you दोनों the वही Bookers? है जो That's us. क्राइम I'm सीन Tammy पर and थे. he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. तो ये भी एक राइटर है. और उसके चलते वहाँ पर गई थी क्राइम सीन पर अलान वेक के बारे में जानने के लिए.
So what did you see in the woods? हमें बताओ. This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. वो उसे क्यों Unless देख रहा है? skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. And then we bolted and called the cops. बढ़िया क्या? What makes you say it was a cult? The masks and knives aren't enough. Enough तो है. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found out. The whole thing was terrifying. अरे इसने रोक दिया उसे, वो कुछ बोलने जा रहा था. चलो अब चलते हैं प्रोफाइलिंग पे. The cult of the tree. What aren't the bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers, Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. The bookers were at Cauldron Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Private party. No trespassing. My book has questions. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. They were telling the truth. Of course they are telling the truth. Okay, let's go. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing, Timmy. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing Deerfest. Oh, God. Saga! Saga. Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird you don't remember. How do you know I have a daughter? पर उसकी डॉटर तो जिंदा है. Oh, कैसी I know बात what कर this रही is. है? You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. If you say so. क्या ये अभी कितनी सुंदर दिख रही है. Let me talk some more. So, Rose, help me out. How do you How think? do you think we know each other? We all know each other around here. It's been a while, but I never forget a face. Or a coffee order. Guess I just have one of those faces. Seen anything out of the ordinary in town lately? Suspicious people in deer masks? No one's suspicious. But soon enough, there'll be lots of happy people wearing deer masks for Deerfest. Practically everyone will be wearing one. Good to know. Okay.
आई गेस हमारा काम यहाँ पर ख़त्म हुआ। देखो अगर हमें ओके हम यहाँ पर बातें ख़त्म नहीं हुई। A cult murdering a man is pretty extreme. Why didn't you tell the police what you saw? We did. We told those two idiot deputies. They didn't listen. And they wanted to throw Ed and I in jail for that murder. You know, Bright Falls is पुलिस just वाले ऐसा क्यों Alabama with करते bigger हैं? trees. This is my case now, and no one is throwing you in jail. If you need anything else, just come to me. क्राइम सीन पर जो भी मिले उससे उसे बना दो मर्डरर। ओह मुझे नहीं लगा था ये खुलेगा पर ये खुल गया। यहाँ पर कुछ है। ओह a deer. Hey there, Mr. Deer. You remind me of a dream I had. Poor deer. कुछ और है क्या यहाँ पर? Can't open this with my bare hands. Exit. ओह खुल गया। ओह ये वॉशरूम है क्यों नहीं खुलेगा? ओके यहाँ पर कुछ भी नहीं है। Let's go. ये I can't force it open. नहीं खुलेगा। ओके चलो चलते हैं बाहर यहाँ से। Hello. How can you be so calm? Corpse is a part of the job. Can't dwell on it too much. और कुछ कहोगे? I guess not. भाई इस तरह देखो मत खा जाओगे क्या? All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. You know how touchy these rural types can Well, be? Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. If you're in the woods at night, the cult will get you. That sort of thing. कम से कम सुना तो है कल्ट के बारे में। Grand wizard or something. Are we? I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Morning, Looks like you have Sheriff. some guests. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. जा रहे हैं ब्राइट Hey, what do फॉल्स you know के about that पुलिस waitress स्टेशन from में। the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? She kept saying that my daughter drowned. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But ऐसा टैलेंट हमें भी चाहिए। Go to the morgue examination room. Hey, boss. Corpse is downstairs ready to go. Yep, in the morgue, all prepped. I'd like to take a closer look as soon as possible. Lead the way, ओ भाई Sheriff. ढकेल दिया इसने मुझे तो दरवाजे से उधर। oh, this is the Brightfalls Sheriff Station. Anything you need, just let us know. We appreciate the support, Sheriff. So we share a morgue with the funeral home. अरे next door. मत It's a ढकेलो shoestring मुझे। budget. I guess you guys don't have that problem though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They That always was cheer cheer me me up. up. I can't say I feel the same. He's joking. मोहर कैसे चीयर करते हैं भाई? कैसी बात कर रहे हो? Okay, here it is. Okay. Let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. What was the cause of death? What other clues can the body give me? चलो देखते हैं कि क्या क्लूज मिलते हैं हमें यहाँ पर। Aha.
They did leave something inside his chest. क्या है भाई, क्या है, क्या है, हमें बताओ. बता नहीं रही लड़की. There's writing on here. यहाँ पे Can't make it कुछ out. लिखा हुआ है. Writing? How'd they manage that? बाप रे. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Defensive wounds. He put up a fight. फाइट तो हुई थी जब वो उसे मार रहे थे. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. चलो लगाते हैं. फाइल हमारे पास, नई फाइल. किलर प्रोफाइल. We're dealing with an organized group of killers, not a lone serial killer. The cult of the tree is behind these murders. This case just became much more complicated. I'll need to start a new file. But it's my first cult case. Exciting. Cult of the Tree. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. Who's involved? Cult goal. और ये क्या लिखा है? What kind of cult? Cult psychology. Cult symbol. Jewelry can be used as a subtle indicator of membership, but this isn't a subtle a badge of pride. Let's see. Time to see what Nightingale's body can tell us. Bloating of joints. भी कुछ ज़्यादा ही bloating हो गई है. Bruises डिफेंड करते हुए. अरे भाई लग जाने लगेगा. ओके, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें यहाँ पर लगेंगी. Chest ripped. Wound is cause of death, but the corpse is bloated, waterlogged. Doesn't add up. यहाँ पर नहीं लगेगा. ओह लग गया. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? चलो देखते हैं क्या है इसके चेस्ट के अंदर. तो चलो देखते हैं कि क्या है इसके चेस्ट में. ओके, ये पेपर. उसके चेस्ट में ये पेपर ठूसा गया था. ओह माय गॉड. It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Manuscript. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. We found these kinds of pages. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Era page. क्या हो रहा है? No, wait.
वो गायब हो गया। ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है? ओह माय गॉड, ओह हेल, ये जिंदा कैसे हो गया? ये चेस्ट में तो हार्ट भी नहीं है। ओह, मुझे तो एक सिंपल FBI एजेंट की स्टोरी लग रही थी, पर यहाँ पर सुपर नेचुरल चीजें चल रही हैं। There's a devil in here. जो स्टोरी में लिखा था वही हो रहा है। See her. Could not see into bright light. मुझे गन ढूंढना है जल्दी से। मतलब कितना डरावना है ये। Please don't make me. I didn't do anything. He's coming. No weapon. The page said to get into the light. Try to stay in the light, avoid being detected by enemies. ओ भाई, प्लीज। अरे मैं क्या करूं? मैं ज्यादा टाइम तक खड़े नहीं रह सकती। He can't see me. My gun's out in the hall. Gotta get it. What the hell? अरे मैं कैसे जाऊं गन लेने? अगर ऐसे बार बार होता रहा तो It's not good. It's not good. तो ये मुझे गन लेने नहीं दे रहा है। विदाउट गन मैं कैसे बचूंगी और कैसे मारूंगी इसको? भाई स्किप करती हूँ। जैसे ये पीछे जाएगा तब हम जाएंगे थोड़ा सा। He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. What the hell? वो इतना फास्ट कैसे आ सकता है यार? मैं तोड़ रही थी। अगर मैं वहां पर खड़ा रहूं तो भी वो मुझे पकड़ लेगा। अगर मैं नहीं खड़ी रहूं और भागूं वहां से गन लेने के लिए तो भी वो मुझे पकड़। मैं जाऊं कहाँ, करूं क्या? Are you damn kidding me? He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Vanished. Thank God. इस बार मैंने पकड़ लिया गन and fired at him. और ये है end of chapter.
Okay, game He saved. didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. ये तो It हम भी helped me सोच fight रहे हैं. him. It just disappeared. Disappeared? तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही. ये फर्स्ट चैप्टर था जो खत्म हुआ. नेक्स्ट चैप्टर हम कल शुरू करेंगे, कल खेलेंगे. तो आज बस यही हुआ है कि हम जो मर्डर साइट पर गए थे वहाँ से हम कॉप्स को उठाकर लाए एग्जामिनेशन के लिए, ऑटोप्सी के लिए, ब्राइट फॉल में. और ब्राइट फॉल में होता ये है कि बिना हार्ड के ये जो बॉडी है वो उठ गई और चली गई वहाँ से उठ के. हालांकि वो अटैक कर रहे थे एजेंट्स पर और इस एजेंट ने 2-3 गोलियां मार के उसे भगा दिया. और अब सागा को ढूंढना है कि वो कहाँ गया. और हमारा जो शुरुआती गोल था, फाइंड द किलर एंड द फाइंड द विक्टिम, वो दोनों बाकी है. अभी भी उसे पूरा करना है. इस मिस्ट्री को सॉल्व करना है. इस भूत को देखना है कि ये कहाँ से आता है और इसका इरादा क्या है, वो करना क्या चाहता है और कैसे ये सब हुआ, वो सब हम जानेंगे अगले पार्ट में. तब तक के लिए बाय बाय. वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा. और अगर आपको मेरा गेम प्ले अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलना. मिलते हैं अगली बार. तब तक के लिए बाय बाय.